हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CGC आर्ट्स एंड कॉमर्स पर वाय द वे। मेरा नाम अमित कुमार साव और आप सभी लोग हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी का सिलेबस कि 2026-2027 बैच वालों के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है गाइस। सो गाइस, सबसे पहला है यूनिट 1। इसमें आपको पढ़ना है गाइस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल ट्रेड एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सोल ट्रेड form of organization, meaning objectives and importance of preparing trading profit and loss account and balance sheet, preparation of trading profit and loss and balance sheet of sole trader without and with adjustments relating to closing stock, outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, income received in advance, depreciation and bad debts, provision for doubtful debts, provision for discount on debtor, creditor, manager's commission, goods distributed as free samples and goods taken by the owner for personal use, abnormal loss, interest on capital and drawings. Not for profit organizations, meaning objectives, necessity, treatment of some important items such as legacy, donations, entrance fees, life membership fees, sale of assets, sale of old newspaper, subscription, endowment fund, honorarium, expenses relating to a specific fund, receipts and payments account, meaning features, differences between receipts and payments account and cash book, income and expenditure accounts, meaning features, differences between income and expenditure account and profit and loss account, preparation of income and expenditure account and क्लोजिंग बैलेंस शीट। फिर आता है गाइस यूनिट 2। इसमें आपको पढ़ना है गाइस अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स सिंगल एंट्री सिस्टम। डेप्रिसिएशन मीनिंग नीड, कॉजेस, ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, सिंपल डेप्रिसिएशन मेथड एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। Accounting from incomplete records single entry system, meaning characteristics and limitations of single entry system, difference between single entry and double entry system, difference between balance sheet and statement of affairs, a settlement of profit and loss by the statement of affairs method only। फिर आता है गाइस यूनिट 3। इसमें आपको पढ़ना है गाइस अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, मीनिंग features, partnership deed and provisions of Partnership Act 1932 in the absence of partnership deed, fixed versus fluctuating capital accounts, preparation of profit and loss appropriation account, goodwill, meaning nature and factors affecting goodwill, methods of valuation of goodwill, average profit, super profit method and capitalization method, reconstitution of partnership firm, meaning circumstances leading to reconstitution, change in profit sharing ratio, sacrificing ratio, gaining ratio, accounting for revaluation of assets and liabilities and distribution of reserves and accumulated profits and loss, admission of a partner, simple problems without adjustment of capital। फिर आता है गाइस यूनिट 4। इसमें आपको पढ़ना है गाइस अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, accounting for share capital, shares and share capital, nature and types as per Companies Act 2013, issue of shares at par, premium and discount, calls in advance, calls in arrear, oversubscription and undersubscription of shares, accounting for forfeiture of shares and reissue of shares, disclosure of share capital in companies balance sheet vertical format, accounting for debenture, issue of debentures at par, at premium and at discount, and issue of debentures for consideration other than cash। So guys, ये था आपका सिलेबस। सो गाइस, आज के लिए इतनी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सी भी अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है गाइस, जय हिंद,
जय भारत।